I think so. Yes? Don't know. Just मैम wait. पता नहीं अभी तक. Okay, I will see. I will see. 30 students are there with me. Just wait. Yes, yes, yes. That I know. It is. Uh, we soon start our class. 50 out of 50, very less participants are here. Very less participants are here. Okay, 29, 30, 31, 32. Shitish Chauhan joined. Okay, let's wait for. Okay, we are starting our class. Now let them come. Let them come because it is not possible like this. Now simply we will start. Okay. Yes, look here. Is my screen is my this register is visible to you? Please let me know. Yes, ma'am. I Yes have ma'am. written here chapter 1 stats. You have to start doing your work in your register. Soon you have to upload it on your Google Classroom when I ask for that. Then chapter number 1 set theory we are starting. It is stats here. How we will start? सबसे पहले what do you mean by a set? तो सबसे पहले set को लेते. I am writing the definition. Then I will let you know what it is. Set. A set is a collection of well sorry. Ma'am, you have to write. Why you write? Start writing. Well-defined objects. Ma'am, wait. Ma'am, wait for 1 minute. I am waiting. Please start writing in your registers. Chapter 1 of number 1 sets. A set is a collection of well-defined objects. Collection of well-defined objects. Please write it in your copy. Sets. A set is a collection of well-defined objects. Up. What is very important in this definition? A set is a collection. Then well-defined. Next is object. So three things will come here. First one is collection. Second one is well-defined. And the third one is objects. See, I am asking one question to you. The set of vowels. Please tell me the answer. Ma'am, 7. IOU. Ma'am, 7. 5. A, E, I, Ma'am, O, 5. Nine. Sorry. 5. है ना? All of you please tell me. All of you agree that they are saying the answer A, E, I, O. You say yes. Unmute yourself. तो Yes, ma'am. अरे Yes, ma'am. बोलो Yes, बेटा, ma'am. Yes, कोई ma'am. दिक्कत नहीं है ना. लगे तो सही. मैथ्स क्लास चल रही है, बच्चे बोल रहे हैं. स्पीक आउट, दे आर लर्निंग. बोलो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. कोई बात नहीं, यस के लिए तो अनम्यूट कर सकते हैं हम. द Yes, सेट ऑफ ma'am. वॉवल. Yes, द ma'am. Yes, आंसर ma'am. विल कम A, E, I, O, Oh, U. you. You can see that इट इज अ कलेक्शन. ये कलेक्शन हो गया. हमने कलेक्ट कर लिए कितने अल्फाबेट में से 5 चीजें कलेक्ट कर ली. ये हो गए वॉवल. ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब समझ में आया. वेल डिफाइंड पे अब आते Yes, हैं. ma'am. If I ask this question, if I ask this question to Saransh, the answer will this one only. Saransh, say yes or no. Yes, ma'am. Yes. If I ask the same question to Dhruv, Dhruv also give me the same answer. Say yes or no. Dhruv reply yes. So it means that you all are getting the same answer. If the same question I ask to a student who is
who is studying in America. ठीक है, उससे भी पूछूंगी तो आंसर यही आएगा, say yes or no. Yes, बताइए. ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, yes. So when this means this set is well defined as it not depends or change by person to person. It means this set is not defined, it is well defined because it is not depends or change by person to person. Change नहीं हो रहा, सबके लिए सेम है. बट आई एम राइटिंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल. मैं यहाँ वेल डिफाइंड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान रखना. So I am writing the next thing. The set of favorite cricketer. In Indian team. Yes, Jep. Ma'am, can you repeat? फिर से लिखा है द सेट ऑफ फेवरेट क्रिकेटर इन इंडियन टीम. मनन आंसर प्लीज. I am asking the question. Please make a set of favorite cricketer in Indian team. Answer Manan. Sara. Yes, Manan. Answer. हाँ बोलो बेटा. I am asking you. Please tell me. I am making a set or the collection of your favorite cricketer of Indian team. Answer बोलो. Virat Kohli. Okay. Manan is saying the answer for this set that Virat Kohli. Please, Saransh, you give me the answer for according to you. Ma'am, Dhoni. Dhoni. Yes, Chirag, you give me the answer. Virat Kohli. Virat Kohli. Yes. Anybody? Yes. Please let me know your names. Aryan Pathak, please give me the answer. Aryan Pathak. Virat Kohli. Virat Kohli. Abhinav Batra, answer. Abhinav Gautam, Ankit Meena, please answer. Mahendra Singh Dhoni. MS Dhoni. 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 Other than this, कुछ नहीं Ma'am, आता. Rohit Sharma. Rohit Sharma. Very good. Who is saying this? Who is saying this? Please let me know your name. Ma'am, Keshav. Keshav. अब देखो what happened here. What happened here? I am asking this question, but all you are giving me the different answer. All you are giving is different answer. मैंने इंडियन टीम के लिए कहा है, तो all you are giving यानी this set vary according to person to person. इनके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं. ऑब्जेक्ट्स वेरी कर रहे हैं. जैसे इसमें ऑब्जेक्ट सेम थे AEIOU, but here in this set it is vary according to person. So this set is not well defined. Are you getting my point? Are you Yes, getting ma'am. Yes, my ma'am. point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. समझ में आई ना बात? पर्सन टू पर्सन वेरी Yes, हो ma'am. गया, चेंज हो रहा है ये सेट. ओके, तो दिस सेट इज नॉट वेल डिफाइंड. इफ आई एम आस्किंग the set of 4 festivals Ma'am, it is well defined. you like, the set of 4 festivals you like. Ma'am, it is not Ma'am, well it is well defined. Ma'am, Yes, ma'am. It is not well Ma'am, it is defined. not well Not defined. well defined. It is not well defined because it is changed by person to person. आपको दिवाली अच्छी लगती है, किसी को होली अच्छी लगती है, किसी को रक्षाबंधन अच्छा लगता है. And I am asking the same question who to the person who is living in America. तो उसके लिए फेस्टिवल डिफरेंट है. The festival is differ there. Are you getting my point? Yes or Yes, Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. This is not a set. This is not a set as it is Not well defined. Not well defined. not defined. If I ask the number of, yes Bilal,
Aditya, correct. The number of persons in your family. What it is well defined? Not No, well. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Again, it is changed by person to person. It is not the set. But if I am writing the set of solutions of x square minus 5x plus 6 equals to 0. Well What's the defined. answer? Ma'am, it is well defined. Well defined. Well defined. And the answer will come. Everybody give me the answer 2 and 3. Everybody give me the answer that 2 and 3, ma'am. This is the answer. All of you give me this answer. Only say yes or no. Boliye. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. And what the ये जो आंसर आते हैं ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट्स. इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स और मेंबर और एलिमेंट. इन्हें क्या क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं सेट के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So it means the definition is clear to my children. What is a set? A set is a collection of well-defined objects. You know, a Yes, set ma'am. is a collection of well-defined objects. Are you getting? Then I am coming to my next part. Yes, ma'am. See, first point. The elements of set always separated by comma. The elements of set is always separated by comma. The set is represented by capital alphabet. ठीक है. सेट को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. थर्ड थिंग, द एलिमेंट्स of a set enclosed in curly braces, not in square, not in small. आप मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए. अगर मैं सेट लिख रही हूं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे हमें कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज डालना पड़ेगा. एलिमेंट सेपरेट होंगे किससे? कॉमा से. द सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल अल्फाबेट से. अब मैं एक एग्जांपल लूंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैंने लिखा है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. Ma'am, screen is not visible. दिस टाइम Yes, आई ma'am. थिंक सो. द अब क्लियर है? इट इज क्लियर. इट इज No, क्लियर ma'am. टू यू? No, ma'am. No, It is ma'am, it getting is not blur. clear. Blur, so I think there is a network issue. Just I want to see the network. Okay, just wait, beta. 1 second, wait. This time it is clear. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am, not till now. Oh, filter. I think the network issue it is. नहीं, if मुझे clear दिख रहा है, but from your side it is not. Nobody is able to see the screen. Please let me know. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am, nothing is No, ma'am. visible. Okay, just Ma'am, wait. it's blur. Ma'am, but your voice is clear. Yes, ma'am, your voice is Okay, clear. clear. देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है द एलिमेंट ऑफ सेट ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा. मतलब जो भी सेट के एलिमेंट सारे, जैसे मैंने लिखा, आई हैव टेकन वन एग्जांपल, द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. आर यू लिसनिंग मी? माय स्क्रीन इज क्लियर दिस टाइम? नेट Yes, तो ma'am. पूरा आ रहा है कहीं पे? No, ma'am. क्लियर है? No, No, ma'am. This ma'am. time also not. No, ma'am. जस्ट वेट. This time it is clear. Yes, This ma'am. time. No, Yes. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So I think, please raise your hand though for please raise your hand if my screen is clear to you. देखते हैं कितने बच्चों के को दिख रही है. If my screen is clear, please raise your hand.
अभी तो मैंने बैक ले लिया. This time my screen is clear. Please let me know. Say yes or no. Hardik, it is clear to you, Hardik? No, ma'am. Okay. No issues. आप देखिए इसे. Just wait. Ma'am, you please dictate the point. I am dictating. Just wait. बेटा ये network issue आ रहा है. I think so. Just wait. I am just checking. मैं एक बार दूसरे नेटवर्क पे स्विच करके देखती हूँ. Maybe it is clear to you. Please let me know. Chirag, it is clear. Manan, it is clear. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Not clear. What is going on? क्यों नहीं clear है? Just wait. मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है. मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही. But if you people are not able to see, then there is a big issue. Ma'am, you can click the image. Ma'am, you click the image and then you can share to us. Okay. Okay. Just wait. Is my screen is clear this time? Yes, ma'am. My Yes, ma'am. It's clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, It's clear. important I have written. Important I have written. The element set always the element of the set always separated by comma. Is this clear? Is this clear to my children? बोलो बेटा. Yes, ma'am. Now it's Yes, ma'am. yes, ma'am. और फिर लिखा है the set is represented by capital alphabet. set को represent किससे करते हैं? ma'am. capital alphabet से. Then the element of a set enclosed in a curly braces. curly braces में enclose कर सकते हैं. We can't enclose it in the square bracket. We can't enclose it in the small bracket. किसमें enclose करना है हमको? curly braces में. ठीक है? Is it clear to you? These 3 points are important points. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Clear. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Then the set of vowels of English alphabet. मैंने ये लिखा. तो हम mathematics पढ़ ले. We are not reading the English literature. जहाँ हम ऐसे लिखेंगे. No. मैथमेटिक्स पे आओ, सिंबल्स पे आओ. तो कैसे क्या कहा मैंने? सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल अल्फाबेट से. तो इट इज योर चॉइस. आप अपने मन से कोई भी अल्फाबेट उठा लो पर कैपिटल लो. तो आई हैव टेकन हियर एम. आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस सेट एज अ कैपिटल अल्फाबेट. इज इट क्लियर टू यू? दिस एम इज विजिबल टू यू? से यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Then I say the element of a set enclosed in a curly braces. तो curly braces use करना है. लगा दिया curly braces. Then इसके ऑब्जेक्ट्स कौन से आ रहे हैं? एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? ए ई आई ओ यू. तो आई विल राइट इट बाय सेपरेटिंग द कॉमा. इज इट क्लियर? So this is English Yes, ma'am. language and this is mathematical formation. Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then just wait. Then fourth point. Fourth point is this. My screen is visible. Please let me know. Yes, ma'am. Please let me Visible. know. Yes, Then ma'am. My fourth point is, मेरा fourth point क्या है? देखो, the fourth point is set not depend on the order of elements. मतलब अगर मैं एम सेट को ऐसे लिखूं तो भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है. ऑर्डर कैन बी चेंज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Set not depend on Yes, the ma'am. order of element. The order of the elements we can change. No issues are there.
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों समझ Yes, में आता ma'am. है Yes, ma'am. it not bother about the order कुछ भी ले सकते हैं. जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, उसमें हमने लिखा था, मान लो वो ए सेट था तो आंसर आ रहा था 2,3. उसको हम लिख सकते हैं 3,2 ऑल्सो. डू यू एग्री विथ मी? Yes, Do you ma'am. agree with me? It not depends on the order. Everybody please say yes if you are getting what I am explaining here. Please Yes, say Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then next. Then the next fifth important point. The fifth important point is that repetition of elements in the set is not allowed. Again, I am explaining. Fifth number I have written. Repetition of fourth point I am saying, beta. Fourth point is this. Set not depend on the order of elements. Order of elements से set पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप order change कर सकते हो. आपने M set में लिखा था A E I O U. A E I O U. You can also write it A E A O U I. Are you getting my point? Are you getting Yes, my ma'am. point? Yes, ma'am. जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें आंसर आया था 2,3. वी कैन ऑल्सो राइट इट 3,2. ऑर्डर कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. दैट विल रिमेन सेम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नॉट अलाउड. एलिमेंट रिपीट नहीं दिखाने हैं. कैसे? देखो, द सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स in the word root. क्या लिखा मैंने? The set of all alphabets in the word root. अब मैं आपसे आंसर कहूं कि इसको Z सेट बनाओ और आप इसको ब्रेसेस लिखोगे और इसके अल्फाबेट्स लिखोगे ROOT. Are you getting my point? Everybody getting? Yes, ma'am. No, ma'am. It is ROT only. Only ROT. अभी जस्ट आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ना, मैं उस पे आ रही हूँ. वैसे तो आप यही लिखते ना, अभी तक मैं ये पॉइंट नहीं बताती. तो यू आर राइटिंग द आंसर इन दिस मैनर. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. But repetition not allowed, तो it is wrong. We will write it. No repetition is there. Repetition नहीं होना चाहिए. So I can write it ORT also. Are you getting? This is correct. Is it clear to Yes, my ma'am. children? Yes, ma'am. Is Clear. it clear to Yes, ma'am. everybody? It is clear to everybody. Take one more example. The set of solutions of this. What the answer will come? It is going to be equal to x minus 1, x minus 1, and x value I am getting 1,1. Then my children, the set, if I represent it by capital B, the answer will come 1,1. But it is wrong. We will write it only this. Is it clear to you? Is it clear Yes, to you? ma'am. Yes, So you, ma'am. what you people understood, these 5 points are very important. You should write it in your copy. Copy में आप लिखेंगे इसको. That first, the element of the set always separated by comma. The set is represented by capital alphabet. The element of the set enclosed in curly braces. Not in this, not in this. मेरी बात ध्यान से सुन लो. गलत नंबर कट हो जाते हैं अगर आप और कोई ब्रैकेट्स यूज करोगे. यूज this. Then the set of vowels of English alphabet can be written in this way. Okay, this way. कैसे लिखा? ब्रेसेस लगाए, फिर उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको सेपरेट किया कॉमा से. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स. ऑर्डर पे डिपेंड नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं आप. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, repetition of elements in the set is not allowed. Repetition of the elements is in the set is not allowed. Repetition allowed नहीं है. ऐसा नहीं करना कि 2 बार इधर 1. Is these concepts clear to my children? Please let me know. Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब प्लीज look here. I am writing something.
of natural number less than 1? प्लीज आंसर बताइए कौन natural number set is given by this. Nothing. There is no natural number. Ma'am, it's null set. Ma'am, your voice is Ma'am, your cracking. voice is not clear. Again is a network issue. अब फिर से बोल रही हूँ. My screen is clear. मेरी screen clear है. My screen is ma'am. clear. No, Screen ma'am. is ma'am. also not Screen is clear. clear. No, ma'am. See? Yes, ma'am, it is kind Ma'am, of a partially little bit visible. clear. Time it is visible. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है. बिल्कुल. Yes, तो देखो ma'am. नेचुरल नंबर सेट होता है 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी. मैंने एम सेट बनाया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1. 1 से लेस देन नेचुरल नंबर लेने हैं. क्या कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से लेस देन है? प्लीज लेट मी नो. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नथिंग वी हैव टू राइट. हमें कुछ नहीं लिखना. वी विल राइट इट दिस. और इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट. हम इसके बारे में और पढ़ेंगे पर अभी समझ में आया दिस इज एम्प्टी सेट. डू यू एग्री विथ मी? Yes, ma'am. Do you agree with me? Yes, ma'am. Yes, very nice. Is it clear? Only 3 yes. What about girls? Girls of my class. बताइए, girls को समझ में नहीं आ रहा. गरिमा, are you listening me? Are you getting what I am explaining? What I am explaining, are you getting? Are you getting or not? Please let me know. Yes, ma'am. Okay. Then the important I'm going to solve it here is that listen to me very carefully. Or cardinal of a set. What means order of a set and cardinal number of a set? क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग सेम है. समझो. It is the total number of elements. It is the total number of elements in the given set. Which of Ma'am, your voice is cracking. them? Yes, ma'am, your order voice of- is cracking. अरे बेटा, it is network issue. What I have written आप देखिए सर. Order of a set or cardinal number of a set. What do you mean by this? It is the total number of elements. It is the total number of elements in the given set. I write this set and I ask you what is the order of this set or a cardinal number. So we will write it as in this way. N of A. Number of element in set A, and what the answer will come? 5. Do you agree with me? What is Yes, the ma'am. cardinal number Yes, of ma'am. A? 5. What is the order of A? 5. And we will write it in this way. What is the cardinal number? This way. Cardinal number of is 5. Order of A is also. Do you Ma'am, your voice is cracking. it not in my hand, beta. Nothing It is is from. audible. Is it clear? ये clear है या नहीं? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. One more example. I have taken one more example. I have taken this. ROT. Please tell me what is the cardinal number of M? 3. 3. 2 answers out of 32, 33 students. Other Ma'am, 3. 3. Three. 3. है ना? It is also called order. It is also called order. It is also called order. समझ में आ Order. गया? Order भी बोलते हैं और cardinal number भी बोलते हैं. Getting or not? Please Yes, let ma'am. me Yes. know. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बिल्कुल clear है. So next, look here. Representation of set
हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकता है, दैट आई एम टेलिंग यू. सेट, there are two forms to represent the set. One is roster form, other is set builder form. In this form, we write objects of a set in braces separated by comma. What is roster form? देखो सबसे पहले the student going to do the first common mistake, वो रोस्टर की स्पेलिंग लिखते हैं ROASTER. नो, इट इज ROSTER. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? घबराना नहीं है, 100% आपको समझ में आएगा. सेट, रोस्टर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस फॉर्म, क्या होती है फॉर्म? इन दिस फॉर्म वी राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट इन ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा. जो अब तक अभी कर रहे थे ना, वो रोस्टर फॉर्म थी. जो अब तक हम करते आ रहे हैं बेटा, वो रोस्टर फॉर्म है. कैसे? मैंने अभी सेट लिखा था ये, all these forms are roster form because objects are written separated by comma in the braces. These are called roster form. जहां objects दिखते हैं, मुझे ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट ऑफ अ सेट दिखाई देते हैं कि ये एलिमेंट है इस सेट के, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय चिल्ड्रन? बताइए. Yes, ma'am. यस, ओके. तो इन विच ओनली 2 यस बेटा, बाकी सब बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं. Yes, ma'am. Understand. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, ओके ओके. तो इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. इसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं. वेयर द ऑब्जेक्ट्स, इसका मेरी तरफ से जो ट्रिक जाता है बच्चों को, ये तो बुक की डेफिनेशन है, मैं बोलती हूँ ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल. जहां तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ अ सेट आर विजिबल. जब तुम्हें एलिमेंट्स दिख जाएं, जब तुम्हें मेंबर्स दिख जाए, ऑब्जेक्ट्स दिख जाए सेट के, तब वो सेट को क्या बोलोगे? रोस्टर फॉर्म बोलोगे. वो कौन सी फॉर्म है सेट की? रोस्टर फॉर्म, वेयर यू एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. गेटिंग और नॉट? प्लीज लेट मी नो. फॉर्म और देखना, वन फॉर्म यू कैन ऑल्सो सी. इधर देखो, बी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, एक्स सच दैट कैसे रीड किया मैंने सेट को? एक्स सच दैट, इस साइन की जगह मैं लिख, Ma'am, your voice is cracking. Ma'am, your voice is cracking. roster is clear? Roster is clear or not? Please let me know. Yes, ma'am. Roster is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roster is clear. Roster is clear. But tomorrow Yes, we ma'am. will start set builder. Tomorrow we will start set builder. Okay? So I'm handing the Okay, class ma'am. to the here. I will send you the notes. Thank you, beta. Thank you. I'm handing the class for you people. Okay. Ma'am, can you send these notes in group?